I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College Tosham. In Bhiwani district, Haryana. Today I will deliver a lecture on real and complex analysis, conformal mapping for the students of BA, BSc 6M, third year. Conformal mapping, suppose the curves C1 and C2 in the z plane intersect at the point P z naught equal to x naught plus eta y naught at an angle alpha 1. Then the transformation fz which maps C1 and C2 respectively onto the curves C1 dash and C2 dash in W plane intersect at P dash W naught equal to U naught plus eta V naught at an angle alpha 2 is said to be conformal if it preserves the sense of rotation. अगर सेंस ऑफ रोटेशन को प्रिजर्व मैंने इनवेरिएंट रखता है एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल है. एंगल मैग्निफिकेशन भी नहीं होता और रोटेशन भी नहीं होता फर्दर, तो उस केस में हम मैपिंग को कन्फर्मल मैपिंग कहेंगे. डेट इज U1 is equal to U2 है as shown in the following figure. अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 as shown in the following figure. ये z प्लेन है, C1 C2 कर्व है, इसके बीच में एंगल अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1 है, पी जेड नोट. और ये W प्लेन है, यू वी एक्सिस है, पी डैश W नोट है, और ये बदलता नहीं है एंगल C1 डैश C2 डैश अल्फ़ा 2 इक्वल टू अल्फ़ा 1. अब हम प्रूव करना क्या चाहते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एफ जेड टू बी कन्फर्मल इज दैट एफ जेड इज एनालिटिक. द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस फॉर द transformation fz to be conformal is that fz is analytic and f dash z is not equal to 0. तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2017 16 12 MDU 2006. Suppose w equal to fz is analytic, ये w प्लेन है. Suppose w equal to fz is analytic in a domain D in the z plane and z naught be any interior point of D. D का इंटीरियर पॉइंट है. लेट C1 डैश एंड C2 डैश, C1 डैश है, C2 डैश be two curves intersecting at points at the point W नोट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, U नोट प्लस एटा V नोट इन W प्लेन corresponding to the two curves C1 and C2 intersecting at Z naught equal to X naught plus eta Y naught in the Z plane. Let W1 and W2 be the 2 points. W1 और W2 दो पॉइंट है. Let W1 and W2 be the 2 points on C1 dash and C2 dash respectively, corresponding to the points Z1 and Z2 on C1 and C2, such that distance between Z1 and Z naught
Let W1 and W2 be 2 points on C1 dash and C2 dash respectively, corresponding to the points Z1 and Z2 on C1 and C2, such that distance between Z1 and Z0 is equal to the distance between x2 and x0. Yeah, Z2 and Z0, Z2 and Z0. तो Z1 और Z0 में डिस्टेंस है, वही Z2 और Z0 में है। दोबारा पढ़ते हैं। लेट W1 W2 be 2 points on C1 dash C2 dash respectively, corresponding to the points Z1 and Z2 on C1 and C2, such that distance between Z1 and Z0 is equal to the distance between Z2 and Z0. लेट इट बी R, ये डिस्टेंस R है मान लेते हैं, ठीक। तो राइट लिखो आप Z1 माइनस Z0 इक्वल टू R e की पावर आइटा थीटा 1, Z2 माइनस Z0 इक्वल टू R e की पावर आइटा थीटा 2. Let alpha 1 and alpha 2 be the angles made by the tangents at Z0 to the curves C1 and C2 with real axis, so that theta 1 approach to alpha 1, theta 2 approach to alpha 2 as R approach to 0. Also suppose beta 1 and beta 2 be the angles made by tangents at W0 to the curves C1 dash and C2 dash with real axis. Let alpha 1 and alpha 2 be the angles made by the tangents at Z0 to the curves C1 and C2 with real axis, so that theta 1 approach to alpha 1 and theta 2 approach to alpha 2 as R approach to 0. Also suppose beta 1 and beta 2 be the angles made by tangents at W0 to the curve C1 dash and C2 dash with real axis. Write W1 minus W0 equal to L1 e की पावर आइटा phi 1, W2 minus W0 equal to L2 e की पावर आइटा phi 2, where phi 1 approach to beta 1 and L1 approach to 0 and phi 2 approach to beta 2 and L2 approach to 0. phi 1 कहाँ जा रहा है, अल्फ़ा 1 पे बीटा 1 पे as L1 approach to 0, phi 2 approach to beta 2 as L2 approach to 0. Now f dash Z0 equal to limit Z approach to Z0 fz minus fz0 to Z minus Z0. तो putting Z equal to Z1 we get, क्या करो, Z equal to Z1 पुट करो, we get f dash Z0 is equal to limit Z1 approach to Z0 f Z1 minus f Z0 Z1 minus Z0 equal to limit Z1 approach to Z0 W1 minus W0 but Z1 minus Z0 limit theta 1 approach to alpha 1 L1 e की पावर आइटा phi 1 डिवाइड बाई R e की पावर आइटा थीटा 1, लिमिट थीटा अप्रोच टू अल्फा 1 L1 बटे R e की पावर आइटा phi 1 माइनस phi थीटा 1, बट f डैश Z
not equal to 0 क्योंकि एनालिटिक है. So we can write f dash z not equal to real part of e की power iota lambda. Then real part of e की power iota lambda equal to limit theta 1 approach to alpha 1 L1 बटे r e की पावर आयटा phi 1 माइनस थीटा 1 implies बीटा 1 equal to lambda plus a implies lambda plus बीटा 1 माइनस lambda बराबर है बीटा 1 माइनस अल्फा 1. And if we take z equal to z2, then beta 2 equal to lambda plus alpha 2, and beta 1 minus beta 2 equal to alpha 1 minus alpha 2. This shows that angle between C1 dash and C2 dash at W naught is equal in magnitude and same sense to angle between the curves C1 and C2 at Z naught. Hence the transformation is conformal. Necessary condition of sufficient condition. देखो दोबारा करते हैं इसको. बीटा 1 है, डिफरेंस बीटा 1 माइनस बीटा 2 है, W नॉट है, W1 W2 दो पॉइंट हैं, phi 1 एंगल बना रहा है ये W नॉट W1 U एक्सिस के साथ phi 1 एंगल बना रहा है ये XY प्लेन में. Sufficient condition that W equal to fz equal to u plus iota v, where u is a function of xy and v is a function of xy, both define conformal mapping from z plane to w plane. Let d alpha and d beta be the line elements in z plane and w plane respectively, so that d alpha का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, डी बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डी अल्फा का होल स्क्वायर प्लस डी बीटा का होल स्क्वायर. तो डी यू ये हमें नॉन रिजल्ट है. करली यू बाई करली एक्स डी यू डी एक्स प्लस करली यू बाई करली वाई डी वाई. डी वी क्या होता है? करली वी बाई करली एक्स डी एक्स प्लस करली बी बटे करली वाई डी वाई. Also therefore d बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डी यू का होल स्क्वायर प्लस आयटा डी वी का होल स्क्वायर. तो आयटा डी बीटा का होल स्क्वायर करली वाई करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली बी बटे करली एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू करली यू वाई करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली वी वाई करली वाई का होल स्क्वायर डी वाई का होल प्लस है प्लस 2 टाइम करली यू वाई करली एक्स करली यू बटे करली वाई प्लस करली वी वाई करली एक्स करली वी वाई करली वाई डी एक्स डी वाई. And since the mapping is conformal and therefore the ratio d beta का होल स्क्वायर is to d alpha का होल स्क्वायर is independent of direction. Is independent of directions. Comparing d beta का होल स्क्वायर with d alpha का होल स्क्वायर we get करली यू वाई करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली बी वाई
curly x whole square curly uy curly y whole square plus curly v बटे curly y का होल स्क्वायर। ये curly u बाई curly x का होल स्क्वायर प्लस curly v बटे curly x का होल स्क्वायर बटे 1 इक्वल curly u बाई curly y का होल स्क्वायर प्लस curly v बटे curly y का होल स्क्वायर बटे 1 इक्वल curly u बटे curly x curly u बटे curly y प्लस u बाई curly x curly बटे 0 implies curly u by curly x का होल स्क्वायर प्लस curly v बटे curly x का होल स्क्वायर इक्वल curly u by curly y का होल स्क्वायर प्लस curly v बटे curly y का होल स्क्वायर एंड curly u by curly x इंटू curly u बटे curly y प्लस curly v बटे curly x curly v बटे curly y इक्वल टू 0 from second we can obtain, this is equation number second, curly u by curly x curly u by curly y is equal to negative curly v by curly x curly v बटे curly y और curly u by curly x डिवाइड बटे curly v बटे curly y is equal to माइनस curly v by curly x बटे curly u बटे curly y इक्वल टू लैम्डा से implies curly u by curly x equal to lambda curly v बटे curly y and curly v by curly x equal to minus lambda curly u बटे curly y 3 from 1 we have lambda curly v by curly y का होल स्क्वायर प्लस lambda स्क्वायर curly u बटे curly y का होल स्क्वायर is equal to curly u बटे curly y का होल स्क्वायर प्लस curly v बटे curly y का होल स्क्वायर। हाँ उसमें चल और लिखना ना therefore from 1 we have lambda square curly v by curly y का होल स्क्वायर प्लस lambda square curly u by curly y का होल स्क्वायर इक्वल टू curly u by curly y का होल स्क्वायर प्लस curly v बटे curly y का होल स्क्वायर फ्रॉम 1 ये 1 और यहाँ 1 क्योंकि curly u by curly x इक्वल टू लैम्डा टाइम curly v बटे curly y है तो ये एक में रिप्लेस कर दे u को विद रिस्पेक्ट टू v से लैम्डा स्क्वायर curly v by curly y का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर curly u बटे curly y का होल स्क्वायर इक्वल टू curly u बटे curly y का होल स्क्वायर प्लस curly v बटे curly y का होल स्क्वायर एक साइड लेगी सारी चीज़ लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 curly v बटे curly y का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 curly u बटे curly y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 curly u by curly y का होल स्क्वायर प्लस curly v बटे curly y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से लैम्डा क्या आ गया प्लस माइनस 1 आ गया। अब when lambda equal to plus 1 then we have curly u by curly x equal to curly v बटे curly y see our equations curly v by curly x equal to minus curly u बटे curly y equation 4 है ये equation 4 shows that u and v are satisfied by Cauchy-Riemann equations and hence fz is analytic. For a function to be analytic, it must satisfy Cauchy-Riemann equations. Also, when
lambda equal to minus 1, we have curly u by curly x equal to minus curly u by curly y, and curly u by curly y is equal to curly v by curly x. तो curly u by curly x equal to curly minus v by curly y, and curly u by curly y equal to curly minus v by curly x. Therefore 5 shows that if v is changed to minus b, then 5 is same as 4, 5 और 4 same है, and hence fz is analytic. Therefore 5 shows that if b is changed to minus v, then 5 is same as 4, and hence fz is analytic. Coefficient of magnification. The coefficient of magnification for the conformal transformation w equal to fz at z equal to alpha plus eta beta is f dash derivative curly alpha plus eta beta. Coefficient of magnification for the conformal transformation w equal to fz at z equal to alpha plus eta beta is f dash alpha plus eta beta. Angle of rotation. Angle of rotation for the conformal transformation w equal to fz at z equal to alpha plus eta beta is argument of f dash derivative alpha plus eta beta. Angle of rotation for the conformal transformation w equal to fz at z equal to alpha plus eta beta is argument of derivative f dash alpha plus eta beta. एग्जाम्पल्स हैं इसके वेस्ट पे. फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन एट z इक्वल टू 2 प्लस आइटा. 16 5 14 5 16 21 में 2016 में MD 2015 14. The given transformation is w equal to z square equal to fz function of z, then f dash z to z f dash z equal to 2z. डेरिवेटिव ले लो इसका, और z क्या दे रखा है 2 प्लस आइटा, तो f डैश 2 प्लस आइटा इक्वल टू 2 टाइम 2 प्लस आइटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आइटा. Now coefficient of magnification is equal to absolute value of f dash z. Absolute value of f dash 2 plus eta, z की जगह 2 plus eta is equal to absolute value of 4 plus 2 eta. And root the coefficient of magnification equal to f dash absolute f dash z. Absolute value f dash 2 plus iota equal to magnitude of 4 plus 2 iota under the root 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 under root 20 equal to 2 under root 5. एंगल ऑफ रोटेशन कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन लिख दिया. एंगल ऑफ रोटेशन निकालना इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड. जेड है equal to argument of 4 plus 2 iota equal to tangent inverse 2 by 4
to tangent inverse half, ठीक हो गया। नेक्स्ट है if u equal to 2x square plus y square, v equal to y square by x, show that curves u equal to k1, v equal to k2 cut orthogonally at all points of intersection, but the transformation w equal to u plus iota v is not conformal नहीं है। यह है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2017 MDU 2013। Two given curves are 2x square plus y square equal to k1 and y square by x equal to k2. Two given curves will cut orthogonally if the product of the slope of tangents to these curves m is -1, m1 into m2 is equal to -1. Let m1 and m2 be the two slopes of the curves 1 and 2 respectively. Therefore m1 equal to dy by dx is equal to -2x by y. m2 equal to dy by dx equal to y divided with 2x अब m1 clearly m1 into m2 -1 independent of xy. To prove that the transformation w equal to u plus iota v is not conformal, it is sufficient to prove that CR equations are not satisfied. Now curly u by curly x is equal to 4z 4x and curly u by curly y equal to 2y, curly u by curly x equal to -y square by x square। ये निकालो आप curly v बटे curly y equal to 2y बटे x। और ये आप देखते हो कि CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। क्लियरली CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। 4x है, ये 2y है, y स्क्वायर बाई x स्क्वायर बराबर नहीं है। Hence the transformation w equal to fz is not conformal. Linear transformation, a transformation of the type w equal to alpha z plus beta, where alpha and beta are complex constants, is known as a linear transformation. We see that this transformation is the resultant of magnification, rotation and translation. By writing w equal to psi plus beta, psi equal to e की power beta lambda phi, phi equal to az and alpha equal to a e की power beta lambda, where alpha equal to a e की power beta lambda. Thus to obtain the defined transformation, we first magnify the relation thus to obtain the defined transformation, we first magnify the region in z plane by the factor alpha equal to magnitude of alpha. Then we rotate the region so obtained through an angle alpha equal to through an angle lambda equal to argument of alpha, and finally we translate the region so obtained parallel to vector beta through a distance iota beta। z plane है, phi equal to az है फॉर एग्जाम्पल, तो psi equal
Magnification psi equal e की पावर eta lambda phi. Rotation w equal to psi plus beta. Translation w plane. दोनों चीज़ होंगी, पहला रोटेशन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा है रोटेशन. तो वी विल students, you can view this lecture online on college website www.bljscollege.com, on college your channel, YouTube channel, and you can download from there. If there is any difficulty or any problem or query, you may ask me. Thank you. Thanks.